Yes, Jai Mata Di everyone. Welcome to my YouTube channel. Today's topic is AC circuit containing pure inductance. AC is a alternating current. Pure means that only inductance is present. Okay. Only inductance is present with your AC supply. This is the meaning of pure. Okay. The units of this inductance is Henry. Now, this is the current and V is the voltage. How much it is? Vm sine omega t. Now, in this, first of all, what is inductance? And inductance is denoted by L. Okay. And what is the difference between the inductor and capacitor? Okay. I will tell you each and everything in this. First of all, inductor stores energy in the magnetic field. Okay. In the magnetic field. Store energy in the form of magnetic field. And the capacitor store energy in the form of electric field. Okay. This is the basic difference between inductor and capacitor. Clear? Now, next is what is the basically use of this inductor? Where you use this inductor? You are using this inductor in the case of induction motors. Okay. Induction motors. You are using this is in the transformer also. Chocks. Okay. Relays, etc. Okay. These are the basically use of this inductor. Clear about this one? And inductor is also a passive component. It's a passive component. Clear to everyone? Now, in this I will tell you about the current. Okay, phenomena of the current. That is, what is the behavior of the current with respect to voltage in this. And I will tell you about the power also. ठीक है, हम पावर के रिगार्डिंग भी बात करेंगे. क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, जस्ट delete this part. Okay, I am deleting all the things. Again I am writing. Now, in this case, inductor you have with the AC supply voltage. Now, in this case, there is some EMF. Okay, this is the inductor and this is your current. V is equal to Vm sine omega t. Now, in this case, अब एक्चुअल में होगा क्या कि करंट जब इंडक्टर कॉइल में जाएगा एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होएगी. ठीक है. ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज डिनोटेड बाय ई. तो क्या फॉर्मूला आता है? एवरीबॉडी नो अबाउट दिस वन, माइनस एल डी आई बाई डी टी. ओके. नाउ, अब जो हमारी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है इसमें, वो अपोजिट होगी अप्लाइड वोल्टेज से. जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है वो अपोजिट होगी अप्लाई वोल्टेज से. तो हम क्या लिख देंगे? बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल एंड opposite to applied voltage.
Okay, so V is equal to minus E. E is minus L di by dt. So that V is equal to L di by dt. Clear? Now, how much is the V? Okay, how much is the V? I am taking this one. Clear? So I think everybody clear about this one. Small v. Now small v is Vm sin omega t. So I am writing after that this part to this. Now in this case, Vm sin omega t is equal to L di by dt. Correct? Now I want the current basically. Okay, I want the current. So I am writing Vm sin omega t okay, this is Vm sin omega t. Now dt and this L is like that. Okay, di is equal to Vm by L sin omega t dt. Or we can write like di is equal to Vm by L sin omega t dt. Integrate. Both side. So di integrate Vm by L sin omega t dt. Okay, this is now integrate. So what will be the answer after that? This is I. Vm by L is a constant term. Integration of this sin omega t. Integration of this sin omega t dt. So again, I am writing sin omega t. It is minus cos omega t divided by omega because it is with respect to t. Correct? Now, after that, write it I is equal to Vm by omega L minus cos omega t. What is this omega L? This is the XL. अब XL क्या होता है? Inductive reactance. Okay. Now I is equal to Vm by XL minus cos omega t. Correct? अब XL कितना होता है? That is 2 pi FL. Okay. Now, what is this Vm by XL? This is Im. Okay. I is equal to V by R. But in this case, R नहीं है, reactance है, तो हमने क्या डिनोट किया? XL. इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे कहते हैं. यूनिट्स क्या होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस की? ओम. ओके. अब माइनस कोस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो? दिस इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. तो हमें यहां से क्या पता चला? बेसिकली जो हमारे पास करंट है, करंट lags behind the applied voltage. अब लैग वर्ड मतलब क्योंकि ये माइनस आ गया, कितने से? 9/2 पाई बाय 2. करंट लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज. करेक्ट एवरीवन? बिकॉज ऑफ दिस 90 डिग्री अप्लाइड वोल्टेज आप यहां लिख सकते हो बाय 90 डिग्री. ओके.
तो हमने यहां से क्या डिफाइन किया, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और वी नो दैट V इज VM साइन ओमेगा टी। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर लैगिंग का। ओके, आफ्टर दैट पावर, हाउ मच पावर, now calculate the power in this. Power is again Vi. Okay, V is the Vm sine omega t, and what about the I is the Im sine ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। करेक्ट। अगर मैं वेवफॉर्म की बात करता हूं तो वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ होगी, ओके, दिस इज आवर वेवफॉर्म। अब करंट क्या है, लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री, तो यहां से वो 90 डिग्री होगी। तो जो स्टार्ट कैसे होगा, जब यहां से ये चीज स्टार्ट होगी तो हमारे पास करंट इस तरह से होगा। करेक्ट। व्हाट अबाउट द पावर, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ओके, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ओके, सो ऑन। तो हमारे पास ये इस तरह से डिफाइन होगी। अगर आपको मैं और क्लियर कर देता हूं, अगर लेट्स सपोज इन दिस, ओके, दिस इज द करंट बेसिकली, ओके, 90 डिग्री, करेक्ट। दिस इज बाय द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म। नाउ why the power is zero in this case? Now P is equal to Vm Im sin omega t. Okay, now Im sin omega t minus pi by 2. What is this? Okay, now what about this one? Minus, okay, it is minus cos omega t. So I am writing this correct, multiply and divide by 2. So in this case, basically this one, 2 sin omega t cos omega t, it comes to basically minus Vm by root 2 Im by root 2, okay, and sine 2 omega t. Okay, understand this one? Now again the frequency is double and this minus power, so everything is zero. So power is zero in this case. Okay, तो पावर जितनी, पावर क्या होगी बेसिकली, पावर कंज्यूम्ड इन द प्योर इंडक्टिव सर्किट इज जीरो। तो आप यहां लिख सकते हैं एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ प्योर इंडक्टिव is 0. Correct everyone? Now after that, numerical. Okay, so this is the numerical, and in this numerical there is an inductor with the value of this inductor is 0.1 Henry. 200 voltage 50 hertz supply is present in this. Find out the inductive reactance, RMS value of the current, power, and equation for voltage and current. First of all, inductive reactance. Okay, how to calculate this inductive reactance? The formula is XL is equal to omega L, that is 2 pi FL. Okay, now in this case 2 into pi, frequency is 50. What about the L? 0.1.
So answer becomes 31.416 ohm. Okay, unit is ohm. Now next is RMS value of the current. It means that IRMS. Okay, what is this IRMS? VRMS divided by XL. Now VRMS is 200, XL is 31.416. Now how much is the value after calculating? After solving by the help of calculator, it is 6.36 ampere. Okay. Now power is 0. Power is basically 0 in the case of इंडक्टर. अभी हमने कैलकुलेट किया, बताया भी था क्यों 0 थी हमारे पास पावर. नाउ आफ्टर दैट इक्वेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट. इक्वेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट. क्या इक्वेशन थी हमारे पास वोल्टेज की? V is equal to Vm sin omega t and I is equal to Im sin omega t minus pi by 2. करेक्ट. साइन Vm साइन पहले हम बात कर लेते हैं. चलो Vm की बात करते हैं. मैक्सिमम वोल्टेज की हम बात कर लेते हैं. मैक्सिमम वोल्टेज कैसे कैलकुलेट होगा? √2 इंटू VRMS. √2 into VRMS is 200. Okay, it is basically a 282.84 volt. Okay, it's a VM. अब ओमेगा भी नहीं हमें पता. चलो पहले हम यहां से IM भी निकाल लेते हैं. ऐसे ही IM निकालना है. IM is √2 into IRMS. अब IRMS कितना था? 6.3. इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लो. कितनी आ रही है? बेसिकली इट इज अ 9 एम्पियर. ओके, तो VM IM अगेन हमने निकाल लिया. अब हमें क्या चाहिए? ओमेगा. आपको ओमेगा बताना है तो आप ओमेगा भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. ओमेगा इज बेसिकली 2 pi f. दैट कम्स 314 रेडियन per second for this case. So this voltage V equal to, what is the value? 282.84 sine 314 t. Okay, what about the current? 9 sine 314 t minus pi by 2. Okay, this is the answer. Okay, this is all about the inductive reactance. If you have any doubt, please comment it on my comment box and after that I will reply you. Thank you so much, and my next video is on the topic of pure capacitance and with the numerical. Thank you so much.